Working with composite data type, right? Objectives after completing this lesson, you should be able to do the following: describe PLSQL collection and records, create user-defined PLSQL record, create PLSQL record with the percentile row type attribute, create associative arrays, index by table of record, right? এই সেশনে আমি জানিবা PLSQL রে কোন কেমিতি তমর রেকর্ড টাକୁ কেমিতি কলেকশন করা যায়, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप केमिति तमे यूज कर परिबो, रो टाइप एट्रिब्यूट तमे केमिति यूज कर परिबो, आरे केमिति यूज कर परिबो बाय द यूजिंग ऑफ इंडेक्स, राइट? Introducing composite data type. Composite data type कौन देखो? Composite data type can hold multiple values, unlike scalar type, right? Are of two types, that is PLSQL record, PLSQL collection. Associative array, index by table, nested table, var array, right? Composite data type, you learn that variable of the scalar data type can hold only one value. जेता आमे आगुरु जो सो variable declare करथुलु, से variable बिटले गोटे टाइम रे गोटे ही value से store करिके निजे पाखे रखुथुला, right? Whereas a variable of the composite data type can hold multiple value of the scalar data type or the composite data type, right? तो composite data type रो meaning कोन? गोटे टाइम रे गोटे variable भितरे multiple value तमे store करिके रखि परियो, multiple data type तमे store करिके रखि परियो, right? There are two types of composite data type, that is PLSQL record, means record are used to treat related but dissimilar data as long as a logical unit. A PLSQL record can have variable of different types. For example, you can define a record to hold employee details. This involves storing an employee number as number, first name, last name as varchar, right? मु गोटे एम्प्लॉय डिटेल मु रखे पाइन चाहे, एम्प्लॉय डिटेल रे मोर कहबो कोन एम्प्लॉय नंबर रहबो, देन तार फर्स्ट नेम रहबो, तार लास्ट नेम रहबो, बट एठी एम्प्लॉय नंबर ता मोर नंबर रे जीवो, बट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ता मोर varchar रे जीवो, राइट? तो ए सब केस रे मते आ इंडिविजुअल वेरिएबल डिक्लेयर करबा दरकार नै। मु गोटे कंपोजिट डाटा टाइप गोटे डिक्लेयर करबी जे कि ए तीनटा का वेरिएबल टा को निज पाखरे स्टोर करके रखि पाइ। मु थरे डिक्लेयर करले निज पाखरे से स्टोर कर रखला, मते आ तीनटा वेराइटी टाइप रो वेरिएबल मते डिक्लेयर करबा दरकार नै, बुझला? By creating a record to store employee detail, you create a logical collective unit. This make data access and manipulation easier. PLSQL collection are used to treat data as a single unit. Collection are of three types, that is associative array, nested table, and var array, right? Why use composite data type? Composite data type हमें कौन पाई use करिबा? You have all the record, all the related data as a single unit. You can easily access and modify data. Data is easier to manage, relate, and transport if it is composite. An analogy is having a single bag for all your laptop component rather than a separate bag for each component, right? PLSQL record or collection. Use PLSQL record when you want to store value of different data type but only one occurrence at a time. Use PLSQL collection when you want to store value of the same type, right? जेमि तमर एठी रहला ट्रुथ टेबल रे ट्रू माने एटा बुलियन फैक्टर ता, तापर डेट फैक्टर ता, तापर मोर varchar फैक्टर ता, देन मोर इमेज फैक्टर, राइट? देन एटा होछ मोर रेकॉर्ड जोटा कि मोर रो रे जोटा आसीबो सेटा होछ मोर रेकॉर्ड रे जाय, रेकॉर्ड कलेक्शन जाय। जोटा मोर कलम रे आसीबो सेटा होछ मोर कलेक्शन रे जाय, राइट? तो एठी मोर varchar 2 अछि, PLSQL इंटीजर भी अछि, इंटीजर टाइप रो अछि। एटा होछ सीरियल नंबर जो पास करछि सेटा मोर इंटीजर टाइप, आ जोटा मोर स्ट्रिंग पास करछि सेटा मोर varchar टाइप रो मोर अछि, बुझला? हैला बुझि पालु PLSQL सॉरी PLSQL एंट्री कलो बुझि पालु, हैला?
काली आसले जीएसटी पढ़ो सर मो कालठू असाइनमेंट एग्जाम सर कर दिन कार असाइनमेंट एग्जाम हमरो प्लस 3 बीएस सेकेंड आसुन ना 4 दिन PLSQL record or collection, if both PLSQL record and PLSQL collection are composite type, how do you choose which one to use? Use PLSQL record when you want to store value of different data type that are logically related. For example, you can create a PLSQL record to hold employee details and indicate that all the value stored are related because they provide information about a particular employee, right? Use PLSQL collection when you want to store value of the same data type. Note that this data type can also be of the composite type, such as record. You can define a collection to hold the first name of all employees. You may have stored n names in the collection. However, name 1 is not related to name 2, right? The relation between these names is only that they are employee names. These collections are similar to array in the programming language such as C and C++, right? C and C++ and Java, right? C++ Java रे जेमती मोर array declare होतला array माने कोन गोटे variable भितरे मु जदि मल्टीपल वैल्यू जदि पास करिया पय चाहूची गोटे variable भितरे जदि मल्टीपल वैल्यू जदि पास करिया पय चाहूची सेम लोकेशन रे ताले मते array declare करियो फॉर एग्जांपल जेमिति धर मु पास करबी कैरेक्टर गोटे मु डिक्लेयर करछि ch कहि कैरेक्टर गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करछि से वेरिएबल भितरे मते केतेटा कैरेक्टर एक्सेप्ट कर परिबो गोटे टाइम रे गोटे कैरेक्टर एक्सेप्ट कर परिबो कारण कैरेक्टर साइज सेति मु कोछि लैंग्वेज कथा कोछि हला कैरेक्टर साइज सेति एबे मु गोटे नेम पास करी जेमति देवाशीष पास करी देवाशीष इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर राइट सेटा सिंगल कैरेक्टर रे ट्रीट करिबोनी सेटा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डी ई बी तो मोर सिंगल सिंगल कैरेक्टर को नै एबे से नेम टाकू जदि गोटे वेरिएबल भितर जदि मु ताकू स्टोर करिया पेन चाहिबी तो वेरिएबल कैरेक्टर रिलेटेड वेरिएबल तो सेति की स्पेस नै जे मल्टीपल कैरेक्टर को निज पाखरे स्टोर करि रखिबो बोली तो मते कोन करिया पड़िबो से वेरिएबल रो साइज टाकू इंक्रीज करिबो से जो साइज टाकू जेतले वेरिएबल जेतले डिक्लेयर कराउ से साइज टाकू जो इंक्रीज कराउ से इंक्रीजेशन टा कोआ जे आरे सी कोन करिवो जे सेम ना रे मेमोरी रे गोटे रु अधिका तुमको स्पेस ऑक्युपाई से करतो देन ता भीतर तमे वैल्यू पास कर देन इंडिविजुअल कैरेक्टर रो गोटे गोटे एड्रेस थाए ता कोजे इंडेक्स नंबर या फिर सबस्क्रिप्ट तम राइट तो से इंडेक्स नंबर ता 0 रु स्टार्ट हो तमे वेरिएबल ला साइज जति की डिक्लेयर करछो से तमरो मेमोरी एलोकेशन 1 लेस देन करिवो काहे कि 0 रु स्टार्ट करले 1 लेस देन मोर सपोज मु 5 साइज डिक्लेयर करछि तो 0 रु स्टार्ट करले केते जाय जिवो 4 जाय जिवो राइट तो से जो तो इंडेक्स नंबर गुडा को तमरा एड्रेस बोली कुआ जाय प्रत्येक टी कैरेक्टर पय एड्रेस कुआ जाय तो डिटो जेमिति तम सी सी प्लस प्लस जावा रे जेमिति तमे आरे यूज करछो पीएलएसक्यूएल भी डिटो सेम टू सेम यूज करते बुझला using PLSQL record manipulating data with PLSQL record advantage of the percentile row type attribute PLSQL record must contain one or more component called field of any scalar record or indexed by table data type are similar to structure in most third generation language including C and C++. Are user defined and can be a subset of a row in a table. Treat a collection of field as a logical unit. Are convenient for fetching a row of data from a table for processing, right? PLSQL record देखो. A record is a group of related data items stored in field, each with its own name and data type. Each record defined can have as many fields as necessary. Record can be assigned initial value and can be defined as not null. Field without initial value are initialized to null. The default keyword as well as
equal can be used in initializing field. You can define record type and declare user defined record in the declarative part of any book, subprogram or package. You can declare and reference nested record. One record can be component of another record, right? तमे एसबु जिनस तमे रेकर्ड रे तमे ग्रुप करिकि रखि परिबो, राइट? क्रिएटिंग ए PLSQL record देखो केमति क्रिएट होची. सिंटैक्स देखो, टाइप नेम इज record, देन फील्ड डिक्लेरेशन, तापरे कॉमा कॉमा देके फील्ड डिक्लेरेशन कर परिबो. जेमिति तमर एठी आइडेंटिफाई टाइप नेम तम देछि सेकंड रे. तो फील्ड डिक्लेरेशन, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, वेरिएबल टाइप, टेबल डिटेल, फील्ड रो जो पूरा डिटेल तार को डाटा टाइप से मेंशन हेची, तार वेरिएबल कोन तमे स्टोर करि परिबो, देन से को टेबल रिट्रीव हेची, डिटो पूरा डिटेल तमे मेंशन कर. बुझला? देखो तमरा येटा देखो, इन PLSQL record are user defined composite type. To use them, perform the following step. Define the record in the declarative section of PLSQL block. The syntax for defining the record as shown in the slide. Declare and optionally initialize the internal component of its record type. The syntax is type name is the name of record type. This identifier is used to declare records. Field name is the name of the field within the record. Field type is the data type of the field. It represents any PLSQL data type except ref cursor, right? Reference cursor. You can use the percentile type and percentile row type attribute is the field type or an initial value. Expression is the field type or an initial value. बुझला? The not null constraint prevent assigning of nulls to the specified field. Be sure to initialize the not null field, right? Not null जो थिबो तमु सेठी इंसर्ट करिया पड़िबो एटा मोर not null बोली. जेमति हमें SQL जेमति हमें कॉलम डिक्लेयर करते, राइट? जेता हम कॉलम डिक्लेयर करथले, टेबल नेम कॉलम नेम हम मेंशन करथले, राइट? टेबल नेम कॉलम नेम जेता मेंशन करथले, जदि से कॉलम रे जदि मु नल वैल्यू एक्सेप्ट न करिया पय चाहुनी, ताला हम कोन लिखथले कॉलम डिक्लेरेशन रे लास्ट टाइम कोन नॉट नल, राइट? दितो हमकु मेंशन करिवार अछि एठी. जेमति एठी मोर रहला PLSQL record structure देखो, field declaration, field 1 data type, field 2 data type, field 3 data type. Then employee मोर एठी रहउची कोन देखो, field 1 रे सपोज मु ओटे डिक्लेयर करले एम्प्लॉय आईडी, तार डाटा टाइप मेंशन करिवि. field 2 रे लास्ट नेम तार डाटा टाइप मेंशन करिवि. field 3 रे मोर जॉब आईडी, राइट? तार डाटा टाइप मेंशन करिवि. देन ताकू मु वैल्यू पास करबे. बुझला? PLSQL record structure, field in a record are assessed with the name of the record. To reference or initialize an individual field, use the dot notation. Record name dot field name. For example, you reference the job ID field in the employee record as follows: employee record dot job ID. You can then assign a value to the record field, right? तो मु एठी पास कले पाली कोन एम्प्लॉय रिकॉर्ड बोली मोटे रिकॉर्ड टाइप तयारी करछि. सेटा मोर कहा को असाइन होछि, जॉब आईडी को असाइन होछि. तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट जॉब आईडी देली, देन जॉब आईडी रे मु वैल्यू पास करली मोर क्लर्क कहि. बुझला? In a block or subprogram, user-defined record are instantiated when you enter the block or subprogram. They cases to exit when you exit the block or subprogram. Percentile row type एटा हम काली स्टार्ट करियो. ठीक अछि? सर काली गोटे भौणर मैरिज अछि काली गोटे. अच्छा, जे मोर माउस जे भौणी काली गोटे दिन सर ऑफिस. ठीक अछि. परना स्टार्ट करियो. परना करिया सर.